Bismillahirrahmanirrahim. We are doing the biochemical composition and functions of the cell, and today we will discuss the cytoskeleton. Cytocell and skeleton structure. You can call it the cytoplasmic network of fibers. We can define it that cytoskeleton is a network of fibers that organize structures and activities in the cell. जिस तरह हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियां हैं, तो these are forming the structure of the body and also performing some functions. With the help of the electron microscope, we can see the fibers extending throughout the cytoplasm. There are three types of the molecular structure in the cytoskeleton. It is composed of three types of molecular structures. Number one is the microtubules. Name indicate micro small, tubule that is a tubular. Then the microfilaments and intermediate filaments. Microtubules thick होंगे, माइक्रोफिलामेंट थिन होंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर होंगे, हॉलो शेप होंगे, और जो इनके बिल्कुल दरमियान वाले होंगे दैट विल बी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द microtubules you will see that the hollow and thick, and the microfilaments, these are thin. These are visible in the, this is the thick microtubules, tubular like, and these are the thin filaments. Then a third component of cytoskeleton, intermediate filaments, it is not evident in this picture. You can also see the microtubules in detail. This is the hollow, tubular, thick, and these are the thin microfilaments, filaments like. We can discuss the role of cytoskeleton in the cell. It will contribute to the support, it will contribute to the movement or motility, and the regulation. The most important and obvious function is the mechanical support to the cell, which is chiefly to maintain the shape of the cell. And it is very important in our cells, in animal cell, because the animal cell lacks cell walls, there is only the plasma membrane. The strength and resilience of the cytoskeleton as a whole is based on its architecture. इसका architecture इस तरह बना हुआ है कि that is give him the strength and toughness. Like a geodesic dome. जियोडेसिक आपने देखा होगा हेमिस्फेरिकल शेल लाइक होते हैं, जो बहुत सी इमारतें बनी हुई हेमिस्फेरिकल, तो उसमें से दे डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वेट ऑफ द स्ट्रक्चर को. इज ए बैलेंस बिटवीन द अपोजिंग फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इट्स एलिमेंट्स. Skeleton of animal cell helps to fix the position of the other body parts. जिस तरह हमारे body parts को fix करते हैं हमारा skeletal system. In the same, the cytoskeleton provide the encourage for the many organelles and even cytosolic enzyme molecule. जिस तरह हमारी body में skeletal system is fixing the different parts of the body, इस तरह जो cell के अंदर cytoskeleton है, ये भी इसी तरह उसको एंकरेज सप्लाई प्रोवाइड करेगा फॉर सर्टेन ऑर्गेनेल्स एंड इवन जो एंजाइम्स हैं, साइटोसोलिक एंजाइम साइटोसोल में, उनकी एनकरेज के लिए. द साइटोस्केलेटन इज मोर डायनामिक देन एन एनिमल. हमारा जो स्केलेटन है, इट्स नॉट डायनामिक, ये फिक्स है आर्म होते, बट the skeleton of the cell, the cytoskeleton, it is dynamic.
it can change its shape, and it can change from dismantled. It can be quickly dismantled in one part of the cell and reassembled in a new location. लेकिन हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या स्केलेटल सिस्टम है, इट इज़ नॉट ए डायनामिक, वो फिक्स है. लेकिन जो साइटोस्केलेटन, जो सेल के स्केलेटन है, जिसका द साइटोस्केलेटन, इट इज़ ए डायनामिक. It can quickly dismantle in one part of the cell and reassembled in a new location, changing the shape of the cell. Then several types of the cell movements or the cell motility also involve the cytoskeleton. The term cell motility encompasses with the changes in the cell location and more limited movements of the parts of the cell. Cell motility generally requires the interaction of the cytoskeleton with motor protein. जो हमारे इसमें मोटिलिटी है या मूवमेंट है स्केलेटन की या इसमें चीज़ों की, that depends upon the motor proteins, जो कि ATP required है जिनमें, they will take part in the movement of the cell organelles. Cytoskeletal elements and motor proteins work together with plasma membrane molecules to allow whole cells to move along fibers outside the cell. You can see it's a vesicle, and this is the receptor of the motor protein, and it depends on the ATP, and this is the microtubule, ATP powered. The motor proteins that attach to receptors on vesicles can walk the vesicles along microtubules or in some class microfilaments. Vesicles containing neurotransmitters migrate to the tips of the nerve cell of axon by the mechanism in a स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो आप इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एक्सॉन में से न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रेवल्स जाता है और द माइक्रोट्यूब्यूल्स विल मूव. A similar mechanism involving microfilaments cause muscle cells to contract. Muscles में जो contraction होती है, that's also similar to these microfilaments. Actin myosin, they comes closer in the contraction and become separated in the relaxation. Vesicle and the other organelles often travel to their destinations along monorails provided by the cytoskeleton. जिस तरह गाड़ी की दो लाइनें हैं ना, इस तरह एक लाइन के ऊपर ये जो है ना वेजिकल या ऑर्गेनल ट्रैवल करते हैं. एंड उसमें एग्जांपल यू कैन सी द वेजिकल कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल. एक्सॉन पे न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल वो इस मोनोरेल पे सफर करते हैं, माइग्रेट होते हैं, एंड द टिप ऑफ द एक्सॉन, वो एक्सॉन की टिप पे पहुंच जाते हैं, एंड द लॉन्ग एक्सटेंशंस ऑफ नर्व सेल्स दैट रिलीज दीज मॉलिक्यूल एज केमिकल सिग्नल्स टू एडजेसेंट नेट. ये इसी तरह जी रेल की पटरी, जिस तरह एक पटरी एक लाइन, दो डबल लाइन नहीं, मोनोरेल, उसके ऊपर भी न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रैवल करेगी और एक्सॉन के एंड पे पहुंच जाएगी, और देन इट विल गिव केमिकल, रिलीज द केमिकल, एंड इट विल गिव सिग्नल टू द एडजेसेंट नर्व सेल. And the vesicle that bud from the endoplasmic reticulum travel to the Golgi along the cytoskeletal tracts. इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम से वेसिकल्स बनते हैं, वो इसी तरह मोनोरेल के जरिए दे कम टू द गोल्जी apparatus. The steaming of the cytoplasm that circulates material within many large plant cells is yet another kind of cellular movements brought about by the cytoskeleton. साइटोप्लाज्म में से विदाउट एनी हिंड्रेंस जो मूवमेंट होती है, इट इज कॉल्ड द स्टीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंड इट इज मेनली occurs in the plant cell. The cytoskeleton is also involved in the regulating biochemical activities in the cell in response to the mechanical stimulation. When there is a mechanical stimulation touch करती है तो उसके बाद there the biochemical activities start there, and it is regulating these biochemical activities. Forces exerted by extracellular molecules via cell surface. सेल के बाहर से कोई फोर्स उसको एक्ट करेगी
apparently transmitted into the cell by cytoskeleton elements and the forces may even reach the nucleus. बाहर से जब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा सेलुलर किसी ने टच किया है तो वो जो उसकी ट्रांसमिशन है that will go up to the nucleus. And sometimes there is a pull on certain plasma membrane, या तो टच की या फिर पुल करेगी इसको, attached to the cytoskeleton, leads to instantaneous rearrangement of the nucleoli and other structures in the nucleus. In this way, cytoskeletal transmission of naturally occurring mechanical signals may help regulate and coordinate the cell response. या तो वो उसको टच करेंगे और वो न्यूक्लियस तक वो ट्रांसमिट हो जाएगी, और या फिर उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एलिमेंट पुल अगर करेंगे तो दैट विल अगेन लीड टू द instantaneous rearrangement of the nucleoli. Now what are the properties? Microtubules. It is the tubulin polymers, globular proteins है. Structure इसका है hollow tubes, as the name indicate, consist of the 13 columns of the tubulin molecules. Diameter इसका 25 nanometer with 15 nanometer in lumen. यानी diameter total इसका ये है, it is 25, लेकिन जो न्यूमन है it is 15 nanometer. Tubular protein subunits. It is a dimer connected by two units consisting of alpha tubulin and beta tubulin. ये बिल्कुल identical नहीं है, बल्कि they are somewhat different. One is the alpha tubulin and the second is the beta tubulin. And the main function of the microtubules, they maintain the main function to maintain the cell shape and compression resisting guiders. जिस तरह गाइडर छत में नहीं डाल देते, इस तरह ये it will provide the structural element. Then the cell motility in the cilia and flagella. Cell can move by its contraction. Pseudopodia, एक साइड को extension हो जाएगी, and in this way the single cell will move. Then the chromosome movements in the cell divisions is also due to the microtubule and the organelle movements. Then the microfilaments. Structure of microfilaments: two intervened strands of actin, each polymer of actin subunits. Muscle में जैसे actin है ना. Then diameter is 7 nanometer and protein subunits is the actin. Main function is the maintenance of cell shape, tension bearing elements, changes in the cell shape, muscle contraction, myosin, actin, myosin, they will contract and relax. Then the cytoplasmic streaming, cytoplasm से the movement of certain organelles without any friction. Then the cell motility in pseudopodia, they will come inside and they can move in this way. Cell division, cleavage, furrow formation. Then the intermediate filaments. Fibrous proteins supercoiled into thicker cables. It is 8 to 12 nanometer. One of the several different proteins of the keratin family depending on cell type. ये keratin type है. Main function of intermediate filaments, maintenance of the cell shape. But here it is tension bearing elements. वो resistant और compression था, ये tension bear कर रहे हैं. Encourage of this nucleus and certain other organelles and formation of the nuclear lamina. Then the microtubules. Microtubules. All eukaryotic cells have microtubules. These are hollow rods, as the name indicate. Tubules, tubular. They are measuring about 25 nanometer in diameter and from 200 nanometer to 25 nanometer in length. The wall of the hollow tube is constructed from a globular protein called the tubulin. Tubulin basically is a globular protein. Each tubulin protein is a dimer
It means consists of two units, a molecule made up of two subunits. A tubulin dimer consists of two slightly different polypeptides, alpha tubulin and beta tubulin. Microtubules grow in length by adding tubulin dimers. जैसे ग्रोइंग इस तरह होती है कि जो tubulin dimers है, they are being added. Can also be disassembled and their tubulin used to build microtubule elsewhere in the cell. ये एक जगह से disassembled हो जाएंगे और किसी और जगह जाके फिर माइक्रोट्यूब्यूल में असेंबल हो जाएंगे. And the two ends are slightly different. इसमें एक एंड तो one end can accumulate or at a much higher rate than the other, thus growing and shrinking significantly during cellular activities. इसका एक एंड तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, दूसरा इतना एक्टिव नहीं होगा. It can only add tubulin proteins, but because it's the end where both on and off rates are much higher on one end. Microtubules shape and support of the cell and also serve as a tracks along with the organelles equipped with motor proteins can move. ये इसको एक ट्रैक के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन इसकी मूवमेंट जो होगी ऑर्गेनेल्स की, that will be the help of with the motor proteins. The wall of the hollow tubule is constructed from a globular protein. Then the centriosome. It's containing a pair of centrioles. You can see here. Most animal cells have a centrosome. It is a region near the nucleus where the cell's microtubules are initiated. Centrosome, center में जैसे, as the name indicates. Within the centrosome, a pair of centrioles, each about 250 nanometer and 0.25 micrometer in diameter. The two centrioles are at right angles to each other, and each is made up of the 9 sets of 3 microtubules. The blue portion of the diagram represent the non-tubulin. इनमें जो blue portion है, ये it is the diagram represent the non-tubulin protein, and that connect the microtubule. We can see it through the transmission electron microscope. Then the microfilaments, actin filaments. Microfilaments are solid rods and about 7 nanometer in diameter. They are also called actin filaments. Microfilaments को हम we can call the actin filament. It's also a globular protein. And microfilament is a twisted double chain of actin subunit. ये twist rope की तरह twist करेंगे. Besides occurring as a linear fragment, microfilaments can form structured network due to the presence of the protein that bind along the side of an actin filament and allow a new filament to extend as a branch. Microfilaments seem to be present in all eukaryotic cells. You can see here the microvilli. These are the microvilli. These are the plasma membrane, and these are the microfilaments of the actin. The surface area of this nutrient absorbing intestinal cell का है. It is increased by its many microvilli and cellular extension reinforced by the bundles of the microfilament. These actin filaments are anchored to a network of intermediate filaments. माइक्रोट्यूब्यूल्स में था कि कंप्रेशन और रेजिस्टिंग था, लेकिन यहाँ पे these are structural role of microfilaments in the cytoskeleton is to माइक्रोट्यूब्यूल्स में तो कंप्रेशन रेजिस्टेंट था, लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स में इट इज जस्ट टू बियर द टेंशन. वहां पे कंप्रेशन और कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहे थे, यहाँ पे इट इज बियरिंग द टेंशन पुलिंग फोर्स. A 3-dimensional network formed by the microfilament just inside the plasma membrane, cortical microfilaments, helps support the cell shape. जो cortical cell के बाहर जो एरिया है उसमें it is forming a 3-dimensional network.
This network gives the outer cytoplasmic layer of a cell called the cortex. The outer जो ये है, it is called the cortex, and it is the semi-solid consistency, just like a gel. And जो center में होगा, it is a fluid-like solution in the interior of the cytoplasm. ये देखें, यहाँ पे actin filament है और myosin filament है. They are, when they contact, they will come near each other. And when they relax, in the relaxation of the muscle, they will depart from each other. यहाँ से देखिए मूवमेंट होगी कि ये सूडोपोडिया है, सीडोपोडिया की एक तरफ को एक्सटेंशन हो गई है, एक्सटेंडिंग सूडोपोडियम. इस तरह इट कैन मूव इन द अमीबाइड कैन मूवमेंट. कॉर्टेक्स है जो ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, ये देखें रीएनफोर्स्ड है, ये इट इज द आउटर सेगमेंट, और ये दिस इज द इनर, ये थिक है, जेल लाइक है, और ये फ्लूइड लाइक है. देन इट इज ए प्लांट सेल, उसमें भी वैक्यूल, यू कैन सी द वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, देन नॉन मूविंग कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, जेल लाइक है, और अंदर वो है मूविंग सोल्यूशन लाइक है. ये देखें उसी तरह ये जेल लाइक है और ये सोल्यूशन लाइक है. Then the intermediate filaments. Intermediate filaments are named for their diameter. एक ज़्यादा थिक थे, एक थिन थे. Tubules थिक थे और microfilament थिन थे. But intermediate filament is larger than the diameter of the microfilament, but smaller than the microtubules. Microtubules which are thick, इससे ये कम होंगे, और जो थिन थे microfilament उससे ये ज़्यादा होगा, तो इसलिए इनको कहते हैं intermediate filaments. And these are specialized for the bearing the tension, just like the microfilaments. Intermediate filaments are diverse class of a cytoskeletal elements. Microtubules and microfilaments, in contrast, are consisting in diameter and composition in all eukaryotic cells. You can see here, each intermediate filament monomer consists of an alpha helical rod domain which connects the amino. एक तरफ जो amino end है और एक तरफ the carboxyl tail है. You can see the amino head and the carboxyl tail. The rods coil around another filament like a rope. ये देखें, ये दोनों एक रस्सी की तरह एक दूसरे पे, they will recoil on each other, and एक end होगा amino end होगा, एक carboxyl terminal होगा. They are aligned with each other. एक तरफ देखे दोनों amino end है और ये दोनों carboxyl हैं. They are being aligned to each other. And some intermediate filaments form the homodimers and other from the heterogeneous. Homodimer एक जैसे भी हो सकते हैं और slightly different भी हो सकते हैं. And these dimers then form the staggered tetramers. Staggered जिस तरह वो बड़े वीक किस्म के लड़खड़ाते से tetramer, dimers become the tetramers that light up in head and tail. Note that the carboxy and amino terminal project from this protofilament. This tetramer is considered the basic subunit of the intermediate filament. ये अब dimer से tetramer बन गया, तीन हो गए. Keratins. Type 1 is the acidic and type 2 is the basic. Intermediate filaments are acidic and basic. Intermediate types 1 are acidic and type 2 are basic. Their monomers are found in the same cells and the dimers must contain one of each. Type A heterodimer different होगा. Keratins also have subtypes that are unique to different epithelial cells. केराटिन की सब टाइप्स हैं जो कि मुख्तलिफ टिश्यूज में डिफरेंट है. ब्लैडर में डिफरेंट केराटिन है, स्किन में डिफरेंट है, और उसके बाद इवन इन वन सेल देयर कैन बी डिफरेंट. एंड इन दिस वे जब मेटास्टेसिस होती है
तो वी कैन सी जब मेटास्टेसिस के जब कोई जिसको कहते हैं कैंसर फैल गया है तो उसको बाद उसकी जो प्राइमरी ढूंढने के लिए कि ये कहाँ से आया, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर और इट इज कम फ्रॉम द स्किन, तो इट कैन बी यूज्ड हियर ना कैराटीन का जो है, क्योंकि ये बता देगी कि ये जो जो मेटास्टेसिस हुआ है दैट इज फ्रॉम द ब्लैडर और स्किन और एनी अदर टिश्यू. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मोर परमानेंट फिक्सचर्स, ये बहुत परमानेंट है देन द माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. These are the permanent, even dead में we can see it. These are often disassembled and reassembled in various parts of a cell. Even after cell die, ये आप टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं different parts में. और after death of the cell, intermediate filaments network often persist. For example, the outer layer of our skin consists of dead skin cells full of keratin proteins, and the chemical treatment that remove the microfilaments and microtubules from the cytoplasm of living cell leave a web of intermediate filaments that retain its original shape. जब सेल डेथ हो गया तो हमारे स्किन का है, तो उसमें भी अगर आप उसको केमिकल लगाने से उसमें से जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दैट विल लीव इट, लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है दे विल रिमेन देयर इवन इन द डेड सेल. Such intermediate filaments are especially important in reinforcing the shape of a cell and fixing the position of certain organelles. इसका मतलब है कि ये सेल की स्ट्रक्चर शेप में और ऑर्गेनल्स को फिक्स करने में it has a very important function. For example, the nucleus commonly sits within a cage made of intermediate filament. जो nucleus of the cell है, it is often present in a cage-like structure which is formed by the intermediate filament. It is fixed in location by branches of the filaments that extend into the cytoplasm. Other intermediate filaments make up the nuclear lamina that line the interior of the nuclear envelope. Sometimes the shape of the entire cell is correlated with function. Intermediate filaments support that shape. For example, कि जो सेल की शेप है वो उसके फंक्शन में सर है. You can see the axon, the long extensions of the nerve cell. They transmit the impulses which are strengthened by one class of the intermediate filament. Axons हैं neurons के axon of the neurons nerve cell. तो these are the in the intermediate filaments हैं जो कि इनको strengthen करते हैं और they transmit the impulses. Thus, the various kinds of intermediate filaments may function as the framework of the entire cytoskeleton. Thank you very much. Next, inshallah, we will study the extracellular matrix.